Okay, welcome back once again to all my dear students and happy new year. Okay, so today we are going to start a new chapter. The name of the chapter that is basic principles of organic chemistry. Now, whatever the chapter we had discussed, that is all about the inorganic. Now, today we are going to start the organic chemistry. Chapter number 12. Let us start. Chapter number 12, that is a basic principles of what? Organic chemistry. Okay, now first of all, before starting the organic chemistry, you have to know that which are the different types of organic compounds are there and from where you can get the organic compound, right? So first of all, we can say that the compound which can be obtained from the minerals, just like we had discussed in the standard 10th, that metal and non-metal. So all these things you can get from the earth crust, right? It will be in the form of minerals, and such a compound is said to be the inorganic compound. So I can write down the compound obtained from what? Minerals. That is from non-living sources. I can say from non-living sources, right? You can get the compound from the non-living sources. That is called what? That is the inorganic compound. They are called inorganic compound. Are called inorganic compound. Understand? Okay. Then second one, the compound which can be obtained from the plants and animals, just like that is from organic, that is a living source, that is called the organic compound. So I can write down the compounds obtained from plants and animals, right? From plants and animals. Plants and animals, that is from living source, right? That is called what? Are called organic compound. Are called organic compound. Understand? Okay, तो इस चैप्टर में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी है. तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? एंड सी, in the ancient time, the requirement of the organic compound will be very less, but nowadays, as the technology will be increased, the requirement will be increased. So here the organic compound will be obtained from the plants and animals, and it is not enough that whatever the organic compound which can be obtained from the plants. Why? Because nowadays as the technology will be increased, the new types of drugs, then medicines, then we can say polymers, all these things are made up of a organic compound. So the name of the scientist, that is a Friedrich-Waller. Friedrich-Waller has developed what? That is a urea, that is the organic compound from the inorganic compound, just like a ammonium cyanide, right? तो फ्रिडलिच-वॉलर ने क्या किया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप किया. तो फ्रिडलिच-वॉलर, दैट इज अ जर्मन साइंटिस्ट, he has prepared the organic compound urea from inorganic compound ammonium cyanide. Understand? So I can write down Friedrich-Waller. Friedrich-Waller. What is the, he can say, German scientist. Prepared. क्या प्रिपेयर किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया. यूरिया की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखनी है तो क्या आएगी? NH2 डैश C डबल बॉन्ड O.
dash NH2 prepare organic compound urea from inorganic compound ammonium cyanide. From inorganic compound क्या था? ammonium what? Cyanide, right? Or cyanide. The molecular formula if you want to write down, then ammonium cyanide means NH4 plus Cn minus. Understand? Okay. So nowadays 95% of substance are synthesized by the human beings. Nowadays 95% of organic substance are synthesized by what? Human being. By human being. Understand? So all these things you have to know, right? So this is the introduction, that from where you can get the organic compound, where you can get the inorganic compound, then what is the name of that scientist who has prepared what? Organic compound from inorganic compound. Understand? So this is the basic. Okay, so write down all these things, and then after, now we are going to discuss about the tetravalency of carbon. Okay, write down first of all. यहाँ पे बेसिक कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? तो कार्बन, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक कंस्टिट्यूएंट है कार्बन, राइट? नाउ द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर हाइड्रोकार्बन. आई कैन राइट डाउन द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड in organic chemistry is hydrocarbon. In organic chemistry is what? Hydrocarbon. क्या है? Hydrocarbon. अब hydrocarbon means what? There is a combination of hydrogen and carbon, so we can say it is a hydrocarbon. Understand? Now from the hydrocarbon, hydrogen will be substituted. See, hydrogen will be substituted by nitrogen, then oxygen, then sulfur, then halogen and other functional group, and you can get the varieties of compound will be obtained. Different types of compound will be obtained. यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और डिफरेंट कंपाउंड विल बी ऑब्टेन. एज फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन देखो, मीथेन है, CH4, राइट? दिस वी कैन से इट एज अ मीथेन. इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन. कार्बन की टेट्रावैलेंसी अभी हम पढ़ेंगे. अगर ये मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और HCl रिलीज होगा. ये रिएक्शन ऐसे होगी, देखो 1 2 3 4, ये मीथेन आ गया, 4 बॉन्ड है प्लस Cl-Cl. अभी क्या होगा कि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे. अंडरस्टैंड? सो दिस वी कैन से Cl3Cl और HCl रिलीज हुआ. सो दिस वी कैन से क्लोरोमीथेन. तो यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंपाउंड, एज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन से भी हो सकता है, ऑक्सीजन से भी हो सकता है, देन क्लोरीन हैलोजन से भी हो सकता है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से होगा. तो यू कैन गेट द वैरायटीज ऑफ कंपाउंड विल बी ऑब्टेन. अंडरस्टैंड? So all these things you have to know. This is the introduction of what? Organic chemistry. चलो. Okay. Now let us discuss about the tetravalency of carbon. चलो, टेट्रावैलेंसीज ऑफ कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी देखते. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज
tetravalency of carbon. Okay, now what do you understand about the tetravalency? पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि what is the atomic number of carbon. The atomic number of carbon is 6 and hence the number of electron in the carbon is 6. I can write down the atomic number of carbon is 6 and hence the number of electron in carbon atom is 6, right? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी वैल्यू भी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन एटम एंड 6 प्रोटॉन इज आल्सो देयर, राइट? सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज the electronic configuration is क्या होगी अकॉर्डिंग टू द अफबाउ रूल. हमने पढ़ा है कि 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0. Understand? So this is the electronic configuration of carbon atom. Hence we can say that the number of electron in its outermost orbit are 4. Hence number of electron in its outermost orbit are how much? 4. देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे. So total number of electrons in the outermost orbit are 4, right? Now in order to attain the stable electronic configuration like inert gas, to attain the stable electronic configuration like inert gas क्या करना पड़ेगा? कार्बन एटम शुड आइदर लूज द 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम शुड आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन. क्या करना पड़ेगा कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसी करनी हो स्टेबल, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना पड़ेगा और यू कैन गेन द 4 इलेक्ट्रॉन, राइट? बट हियर द कार्बन कैन नाइदर गेन नॉर लूज द 4 इलेक्ट्रॉन. व्हाई? टू अचीव दिस a very large amount of energy is required. To achieve this, a very large amount of energy is required. क्यों? देखते हैं हम कि अगर if carbon lose the 4 electron और gain 4 electron, अगर वो लूज करेगा तो क्या होगा? C+4. गेन करेगा तो क्या होगा? C-4, राइट? तो ये लूज करने के लिए और गेन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. तो कौन सी एनर्जी? यहां पे कौन सी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. दैट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा IH. अंडरस्टैंड? और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ा है, राइट? एंड इट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा EGH, राइट? व्हाई? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पे देखो कि इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये n = 1 और n = 2. यहां पे देखो तो 1 और 2, 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और 2 में कितने हैं? 4. 2, 3 और 4. और यहां पे कितने प्रोटॉन है? तो 6, राइट? सो यहां पे इफेक्टिव इन द न्यूक्लियस, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर.
So that's why we can say that the outermost orbit electron is more attracted towards the nucleus. क्या होगा कि जो outermost orbit में जो इलेक्ट्रॉन है उसका attraction क्या होगा, ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर यहां से जो इलेक्ट्रॉन अगर हमको रिमूव करना है तो भी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो भी ज्यादा. तो रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the carbon can neither lose nor gain, but the carbon atom share 4 electron with some elements and forms a 4 covalent bond. So I can write down, thus carbon atom, what? Carbon atom share 4 what? Electrons with some elements, right, and forms a 4 covalent bond, and forms 4 covalent bonds. It can form a 4 covalent bond. Understand? So now we are going to discuss about the tetravalency. First of all, write down all these things, and then after we are going to discuss about the tetravalency. So all these things is the basic concept of carbon atom. That what is the atomic number, their electronic configuration, then if how many electrons are there in the outermost orbit, they gain the electron, lose the electron, what happened. Okay, so all these things you have to know. First of all, write down. चलो अब देखते हैं कि टेट्रावैलेंसीज ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन. नाउ यहाँ पे टेट्रावैलेंसीज ऑफ कार्बन एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि C6, सो आई कैन राइट डाउन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0. यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे? 2s ऑर्बिटल में. 1 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड 1 2pz ऑर्बिटल इज एम्प्टी, राइट? नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट. यहां पे देखो एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? C6 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. अभी देखो सॉरी z1. नाउ all the 4 electrons which are present in the outermost orbit all are unpaired. सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए, क्योंकि यहां पे एक्साइटेड स्टेट में 2s वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया? 2pz में, राइट? So this is the excited state electronic configuration of carbon atom. Now you can say that here in the excited state all the 4 electron present in the outermost orbit are unpaired. All 4 electron in excited state, all 4 electron present in outermost orbit are unpaired, right? अब क्या होगा? These 4 electron
आर इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। यहां पे देखो दो अलग अलग ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन कौन से में 2p में। तो आई कह रहा हूं दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। दिस 4 इलेक्ट्रॉन आर इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, राइट। लाइक कौन कौन से, तो लाइक s and p ऑर्बिटल, लाइक s and p, understand? Is it clear? If these unpaired electrons are to form 4 covalent bond, then 4 bond which are formed cannot be considered as an equivalent. अगर ये 4 बॉन्ड बन सकते by sharing the electron with the another element, then all the 4 bonds are not equal. As for example, अगर हम एग्जांपल लेते कि यहाँ पे कार्बन है, राइट, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, राइट। तो अगर ये हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे जो शेयरिंग हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन का और जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पे ऑल द 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। व्हाई? बिकॉज वी कैन से that 1 electron in the carbon atom are in the 2s orbital and 3 electrons are in the 2p orbital, understand? But experimentally it will be proved that all the 4 electrons, all the C-H bond, 4 C-H bonds are equivalent, understand? So that's why we can say that in the methane all the C-H 4 bond are equivalent. Is it clear? And whatever the bond it can form, that bond is said to be the covalent bond, understand? So this we can say it is a methane, okay? And this we can say tetravalency. तो हमें यहाँ पे इतना याद रखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, 4 बॉन्ड होने ही चाहिए कार्बन के साथ। ये देखो 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते कि इथेन है, इथेन लिखना है तो कैसे लिख सकते, तो यहाँ पे C2 तो H6 है, तो 1 और 2 कार्बन है, राइट। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे H H H H H 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो ये कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4, क्यों? क्योंकि टेट्रावैलेंसी। ये कार्बन के साथ 1 2 3 एंड 4, अंडरस्टैंड? सो हियर इन द कार्बन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट 4 unpaired electrons are present and all the 4 unpaired electrons are share the electron with the another elements and forms a covalent bond, understand? तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड भी नहीं होने चाहिए, 3 बॉन्ड भी नहीं, कितने होने चाहिए, 4 बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होना चाहिए, अंडरस्टैंड? सो दिस वी कैन से इथेन। अगर प्रोपेन का लिखना है, चलो प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो ये देखो 1 2 और 3, ये 1 2 3 1 2 1 2 3। अब देखो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये कार्बन 4, ये कार्बन 4, अंडरस्टैंड? सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज CH3। ये देखो CH3 हो गया डैश, चलो CH2 डैश, ये CH3, अंडरस्टैंड? सो दिस वी कैन से इट इज अ प्रोपेन, अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, अंडरस्टैंड? So all these things you have to know. First of all, write down all these things, and today up to here it's enough. In the next video we are going to discuss about the hybridization. Now what is hybridization? What is the shape of the particular molecules? Just like a methane का shape कौन सा है, ethane का shape क्या है, then alkane, alkene, alkyne, okay? So all these things we are going to discuss in the next video. So in this video up to here it's enough. Thank you very much.